Hi guys, welcome back to the another video of cybersecurity series where I'll be guiding you how to start, when to start and where to start. If you are a BTech student and क्या चीज़ें हैं वो जो आपको करनी चाहिए. So this is the video series which I am making for you guys to help you better understand you better all the terms and technologies which is available there in the market and the skill set you have to be ready with. My name is Jahangir Alam. I'm a cybersecurity engineer and having 7 years of experience into the same field. Cybersecurity is the fastest growing field and expected to grow 33% by 2030. So if you are finally a student of BTech and thinking to start your career into the cybersecurity and looking for the roadmap, this is the video for you guys. वीडियो को हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें हैं, ये आप कर सकते हैं. तो फर्स्ट स्टेप इज टू बेसिकली अंडरस्टैंड दी networking fundamentals. This is the must if you are thinking about to start your career into cybersecurity. Networking fundamentals is the must for everybody, whether they wants to go to the red teaming or they wants to go to the blue teaming. And the networking fundamentals जिसमें हमारे आते हैं IP addressing, subnetting, routing, OSI model, TCP IP. तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको ना सिर्फ समझना है, you have to demonstrate, you have to understand it. Basically once you understand the first step जहाँ पे आपको नेटवर्किंग की नॉलेज मिलेगी, जहाँ पे आप प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे. द सेकंड थिंग इज टू अंडरस्टैंड द लिनक्स. लिनक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट हु इज graduating this year and passing their BTech. They must be knowing about the Linux operating system. So in Linux आपको अंडरस्टैंड करना है लिनक्स के लॉग्स, लिनक्स के कमांड लाइन, बेस लाइन और आपका लिनक्स परमिशंस. तो कैसे एक फाइल की परमिशंस को मॉडिफाई करना है, दोज थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड. एंड फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यू नीड टू अंडरस्टैंड द एक्टिव डायरेक्टरी. तो दो स्टेप्स के बाद में जब आप लिनक्स और नेटवर्किंग की आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, द थर्ड थिंग इज टू understand and doing the lab of the virtualization. So virtualization is basically nothing where it's creating virtual machine inside your physical laptop. So once you understand कि virtualization कैसे होता है, क्या क्या आप कैसे आप कर सकते हैं, virtualization के लिए जो हमारे पास टूल है वो VMware है and VirtualBox है and the Docker. These three are the tools for the virtualization which you can use for your lab purpose. The fourth step is the cybersecurity fundamental. Learn about the CIA model, firewall, VPN, proxy, antivirus, endpoint, and a basic understanding about the attack surface like the DDoS, malware, phishing emails, ransomware. So you need to understand. So जब आप अपने ये पांच चीज़ों पे अपना स्टार्ट कर दें तो उसके बाद में we have the tools जहाँ पे आप प्रैक्टिस करें. फर्स्ट हमने डिस्कस किया about the networking, second the Linux, third one was the virtualization, fourth cybersecurity fundamentals, and fifth is the tools. So basically you need to learn, you need to understand, you need to know about the Wireshark, Nmap, Splunk. जो भी टॉपिक्स का हम नाम यूज़ कर रहे हैं इस वीडियो में, I'll be explaining about those topics. Let's suppose Wireshark, let's suppose the Nmap in the next video. The sixth step is the certification. कि कौन सा सर्टिफिकेशन हमें करना है. So अगर आपको रेड टीमिंग में जाना है तो the basic certification is the CEH, Certified Ethical Hacker. Then उसके बाद में हमारे पास में ब्लू टीमिंग और नेटवर्किंग के लिए हमारा उसके लिए the entry level और the foundation of the networking is the CCNA, Cisco Certified Network Administrator. Later on जब ये सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो how the cloud technology comes into the picture, how the cloud technology is useful nowadays, तो हम उसके बारे में बात करेंगे. But cyber security is not about learning it overnight, it is about continuous practice. So जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप लैब करेंगे, जितना आप प्रोटोकॉल्स को समझेंगे, you will get better every day. Certification is not really important, but आपको knowledge होना is the must. Once you understand CCNA में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आप कर सकते हैं, तो you will be in a position to prepare for the interview. And for interview, I'll be creating another videos on my channel where I will be guiding you कंपनी में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब इंटरव्यूज़ होते हैं एज ए नेटवर्क इंजीनियर.
and I'll be also helping you if you are doing your preparation for the product based company. In this video, this was enough, guys. If you found this roadmap is helping for you, do like, share, subscribe and share with your friends who is doing BTech, and you can also reach out to me personally on LinkedIn so that I can guide you better. I have some channels created on my WhatsApp where I'll be interacting each and everybody on the daily basis. So if you have any questions, any comment, any suggestion, do let me know in the comment. I'll be answering your questions and queries, and I'll be clearing your doubts. So if you like this video, hit the like button, share and subscribe to my channel. Bye bye.